And to initiate the session, I have Kudrat Sharma with me. So, Kudrat is Assistant Vice President of Careers and Partnerships team at Internshala, and she have 12 years of experience in the education industry. She knows everything about how to create a good resume and a cover letter, and yes, with that, how to crack interviews as well. So, Kudrat, like we have done previously in today's session, also, I would like to initiate the discussion with asking set of questions that I often get from students. So, all right. So, shall we begin the session, Kudrat? Absolutely, Ishika. Thank you so much for the welcome. And it's always lovely to interact with the students. And I will be more than happy to answer all the questions that we get today. But starting with your question first. All right. So, the first question I would like to ask is that what do you think? What is the difference between a normal resume and a ATS-friendly resume? Wow, that's a good question. So, first we need to understand that what was an old resume and why was there a need to create an ATS friendly resume. You know, back in the day when I did my MBA and when I started my job, we were asked to create resume on a Word document, and sometimes you also used to do it on a paper. And our understanding of a resume was our name, our credentials, and educational qualification, our hobbies, our interests, our address, our nationality, our date of birth, and a declaration below that whatever we have mentioned in the above document is absolutely true. So and we used to apply for organizations profiles. Sometimes it used to happen that we used to give that document at the gate for the HR to get evaluated and shortlisted so that they could inform us that whether we are shortlisted or not. Although that was way back that I'm talking about. But when you receive a lot of applications, right, it's practically difficult for a human's eye to screen through all the applications, right? That is where your AI comes in. That is where your application tracking system comes in. It is a whole new different software that has been designed for the purpose of shortlisting the candidates, and that to the right candidates. बिकॉज होता क्या है कि कई बार कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जॉब के लिए अप्लाई करते हैं जिनका एक्सपीरियंस रेलिवेंट नहीं होता है एंड अगर हमारे पास एटीएस नहीं है तो एक ह्यूमन आई के लिए अगर वो 100 रेज्यूमेज इवेलुएट कर रहा है दिन में तो इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर मी टू स्क्रीन थ्रू एवरीथिंग राइट सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी. How is it different from a traditional resume is that it has all the information. It is basically designed on the algorithm to work on certain principles. इसके भी कुछ एक रूल्स हैं जैसे नॉर्मल रेज्यूमे के होते हैं. हमें जब रेज्यूमे बनाना होता है तो हमें पता है कि हमें अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है, अपना एक्सपीरियंस लिखना है, अपना प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स के बारे में मेंशन करना है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी है. ऑफ कोर्स एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे में भी ये चीज होती है, लेकिन इन अ मोर शॉर्ट एंड अ क्रिस्प वे. अगर एक कंपनी को एक रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करना है जो एटीएस फ्रेंडली है तो उसके सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, सर्टेन एल्गोरिथम्स पे वो वर्क करता है. जैसे कि सबसे पहला है रेलेवेंट यूसेज ऑफ कीवर्ड्स. राइट, व्हाट इज कीवर्ड्स? जो हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ होते हैं. राइट, सो दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूसेज ऑफ कीवर्ड्स. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स. हमारे को आदत है अपने रेज्यूमे में कहानियां लिखने की, सब कुछ पोर करने की, सो दैट एक एचआर को लगे कि इसको सब कुछ पता है, जो कि गलत है. इन अ वे हमें उस चीज को इस तरीके से लिखना चाहिए कि आप मैसेज भी पास ऑन कर रहे हैं लेकिन ज्यादा मेरे को टायर्डनेस भी नहीं हो रही है पढ़ने में. इसीलिए इसका सेकेंड बेसिक प्रिंसिपल होता है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स. एक हो गया टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स, एक हो गया टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स. हमारा जो नॉर्मल रेज्यूमे होता है उसमें कई बार हम लोग टैब्यूलर फॉर्म में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को शोकेस करते हैं, या वी यूज टू मेनी लाइनर्स, हेडर्स, फुटर्स एंड ऑल दीज थिंग्स. लेकिन जो एटीएस है वो सिंपल फॉर्मेट उठाता है.
स्टैंडर्ड आपका जो फॉर्मेट है उसमें ज्यादा लेआउट्स नहीं होने चाहिए, सिंपल फॉर्मेट्स होना चाहिए, ग्राफिक्स नहीं होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स लेआउट्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो ह्यूमन आई तो नहीं है, इट इज वर्किंग ऑन एन एल्गोरिथम। तो अगर उसको बहुत सारी लाइंस या बहुत सारी चीजें उसमें नजर आएंगी या वो उठाएगा तो वो शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाएगा, करेक्ट। देन द अनदर थिंग इज कि हमारे रेज्यूमे में, जो हम नॉर्मल रेज्यूमे बनाते हैं, उसमें हम लोग हेडलाइंस यूज करते हैं जैसे करियर ऑब्जेक्टिव या प्रोफाइल समरी, या हम लोग यूज करते हैं एक्सपीरियंस, या हम यूज करते हैं एजुकेशन या एकेडमिक क्वालिफिकेशन। लेकिन जो एटीएस है, इट वर्क्स ऑन स्पेसिफिक्स, स्टैंडर्ड हेडलाइंस। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से स्टैंडर्ड हेडलाइंस? जैसे कि आप करियर ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं, सिर्फ प्रोफाइल समरी नहीं लिख रहे हैं, करियर ऑब्जेक्टिव। फिर आप एक्सपीरियंस नहीं लिख रहे हैं, आप वर्क एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, बिकॉज रिमेंबर द फर्स्ट रूल, इट्स द कीवर्ड्स, राइट। तो मैं आपका वर्क एक्सपीरियंस उठाऊंगी, मैं आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एज एन एटीएस टूल उठाऊंगी, मैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं, मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज अ हेडलाइन उठाऊंगी। तो स्टैंडर्ड हेडलाइंस का जो यूज हम लोग करते हैं, दैट्स वन पार्ट। देन हम लोग कोशिश करते हैं कि रेज्यूमे को, एटलीस्ट जो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को रेज्यूमे बनवाते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं पैराग्राफ्स ना हो, ताकि वो क्लटर्ड ना दिखे। एटीएस का भी ये एक रोल है कि आप इजी टू रीड फॉन्ट एंड बुलेट पॉइंट्स में अपनी सारी चीजें लिखें, प्रोफेशनल फॉन्ट्स एंड बुलेट पॉइंट्स। बिकॉज जब आप कीवर्ड्स लिखेंगे, जब आप बाकी चीजें लिखेंगे, तो उसको स्क्रीन थ्रू करना इजी होगा आपके रेज्यूमे के लिए। लेकिन अगर हम पुराना रेज्यूमे देखते हैं तो उसमें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बहुत सी चीजें, हम क्रिस्प होना भूल जाते हैं। एटीएस आपका नंबर्स भी उठाता है, जैसे कोई सेल्स बैकग्राउंड से है, उसने 50% अपना टारगेट अचीव किया इन 1 क्वार्टर, तो अगर वो 50% लिखता है उसमें और टर्मिनोलॉजी लिखता है जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है, तो उसके रेज्यूमे के पिकअप होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। देन the most important thing which everybody forgets, and that is the way we save our files name. हमें आदत होती है अपना रेज्यूमे 1 2 3 4 सेव करने की, या अपने निक नेम से सेव करने की, या हमें आदत होती है कि हम उस रेज्यूमे को जिस भी तरह से चाहें सेव कर देते हैं। लेकिन नहीं, एटीएस में आपको जो अपना रेज्यूमे सबमिट करना होता है, वो या तो चलो आप पीडीएफ में कर रहे हो, चाहे डॉक फॉर्म में कर रहे हो, लेकिन उसका नाम जो है वो करेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर मैं हूं, मैं अपना रेज्यूमे सेव करूंगी कुदरत एस, बिकॉज कुदरत शर्मा, पूरा नहीं लिखूंगी क्योंकि बहुत बड़ा है, कुदरत एस अंडरस्कोर पीडीएफ या डॉट फाइल या जो भी है, ठीक है, आप वर्ड में भेज रहे हैं, पीडीएफ में भेज रहे हैं, तो वो आपको इसमें करना बहुत जरूरी होता है। द नेक्स्ट इज कि स्पेलिंग मिस्टेक्स या एरर्स का इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। और आजकल तो वैसे भी आप लोग रेज्यूमे कई बार कैनवा पे बनाते हैं या वर्ड पे बनाते हैं, जिसमें ऑटोमेटिकली आपकी ऑटो करेक्शन ऑन होता है, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक का चांस बहुत कम है, या ग्रामेटिकल चीजों का मिस्टेक होने का चांसेस बहुत गरफ है। सो प्रूफ रीड केयरफुली, बिकॉज टाइपोज एंड मिस spellings that happen in the resume can prevent the ATS as a tool from recognizing your important keywords. Correct? So, the basic difference between a traditional resume and an ATS-friendly resume, because ये अभी चल रहा है और ये चलेगा. ATS will keep on, going forward. इसमें और भी improvisations आ सकती हैं, इसमें बहुत सी चीजें आ सकती हैं। और अगर जो स्टूडेंट्स अपना रेज्यूमे बना रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसपे आप अपना रेज्यूमे अपलोड करके, करेक्ट, यू कैन गेट इट वेरीफाइड कि आपका एटीएस स्कोर कितना है। वंस यू स्कैन थ्रू दीज वेबसाइट्स, लाइक एक आउटस्पार्क करके है, जेटी करके आती है, एनहांस सीवी करके आता है, इसमें इफ यू अपलोड योर रेज्यूमे according to the job description also and otherwise also, you get an evaluated ATS score कि हो सकता है 65% है, 75% है, so you would know how much do you have to improve. Because I remember, Ishika, when you and me were taking one of the interviews for one of our interns that we hired in the team, she precisely mentioned that I made my resume 17 times.
बिकॉज वो एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे के स्कैनर में अप्रोप्रिएट Exactly. नहीं बैठ रहा था, एंड दैट्स हाउ शी गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द रोल दैट शी इज वर्किंग फॉर टुडे. So, that's how the effort goes. She checked it like 17 times. And I think that thing of checking, rechecking, redrafting shows that, you want that resume. So, yeah, I think, yeah, to answer your question, this is the probable difference. It's really good to know, Gujrat, कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है. And I think that now also most of the students are making their resumes in tabular format. जैसा आपने कहा education में they are using, internship में they are using. So now after listening this, we are saying that don't make any kind of tables in your resume and save Absolutely. your resume with a good name. So Absolutely. yes, I'll ask you one another question. आपने कहा कि ATS अभी चल रहा है and चलता आएगा future में भी. So, Kudrat, I want to know what was the need of ATS in picture and what all companies, what kinds of companies are using this ATS as a tool to, select resumes. See, I'll tell you the requirement is that एक ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोफेशनल लाइक मी फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेरे पास 10 तरह के रोल एट अ टाइम ओपन रहते हैं हायरिंग के लिए. तो मैं अपना जॉब डिस्क्रिप्शन पोस्ट करती हूँ लिंक्डइन पे, नौकरी पे, कुछ एक कंसल्टेंसीज को देती हूँ, कुछ एक वेंडर्स को देती हूँ, वहां से मेरे पास बल्क एप्लीकेशंस आती हैं. तो बल्क एप्लीकेशंस जब मेरे पास 1,000 आ रही हैं तो मैं 1,000 चेक तो नहीं कर सकती, क्योंकि अगर 10 प्रोफाइल की 100 एप्लीकेशंस आती हैं तो वो 1,000 बन जाती है. उसमें से मैं सिर्फ 80 चेक कर पाती हूँ. हो सकता है वो 80 मेरे लिए रेलेवेंट भी ना हो और रेलेवेंट प्रोफाइल्स बाद में देखने को मिले, लेकिन मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, मैं नहीं चेक कर सकती, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया. करेक्ट. वहां से इसकी रिक्वायरमेंट आई. जैसे आप लोगों को चैट जीपीटी आजकल प्रोफिशिएंट है, कोई भी चीज आपको ढूंढनी हो, क्रिएट करनी हो, आप लोग चैट जीपीटी पे चले जाते हैं, तो उसका भी कहीं से आइडिया किसी को आया होगा, राइट. सो फॉर मी व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट बिकॉज one individual could not scan through so many resumes and वो appropriately नहीं हो रहा था. और अगर आप organizations like Google, like Infosys, like Capgemini, इन सब में जहां पे एक टाइम पे बल्क हायरिंग होती है, राइट, तो वहां पे एक रेज्यूमे को वेरीफाई करना, क्योंकि ये पहला डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस के ऊपर हम एक स्टोरी लाइन बनाते हैं कि ओके, दिस इज व्हाट इशिका इज, इसका ये प्रोफाइल इस रेज्यूमे इस प्रोफाइल के लिए आया है, वेदर ये सूटेबल है कि नहीं है, राइट. तो अब तुम्हारा तो मेरे पास रेज्यूमे आ गया, मुझे लगा तुम XYZ प्रोफाइल के लिए रेलेवेंट नहीं हो, लेकिन मैंने उसको रख दिया कि बाकी कभी आएगी पोजीशन तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी, और मैं भूल गई, राइट. तो वो मेरे डेटा बैंक में भी नहीं रहा. तो इसलिए बिकॉज टू काउंटर सच प्रॉब्लम्स ATS वाज डिजाइन, राइट, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. नाउ द फ्यूचर ऑफ ATS फ्रेंडली रेज्यूमे लाइज लाइकली इन्वॉल्व्स अ ग्रेटर एम्फोसिस कि हमारे जो AI ड्रिवन कीवर्ड्स हैं उसका एनालिसिस कैसे होता है, करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. मेरी एक स्टूडेंट थी लॉन्ग टाइम बैक. शी हैड अ इंटरव्यू विद McKinsey एंड Netflix एट द सेम टाइम. दो ऑर्गेनाइजेशंस में उसका इंटरव्यू था, एंड Netflix में प्रिसाइसली मेंशन था, सिंस इट्स अ मार्केटिंग रोल, वी वुड वांट यू टू क्रिएट अ क्रिएटिव रेज्यूमे with whatever way you can, you just surprise us. Job description में ये चीज mention थी. And she was a dual specialization student, so she had marketing and HR as a specialization in MBA. तो मार्केटिंग के लिए वो नेटफ्लिक्स के लिए अप्लाई करना चाह रही थी, और HR में वो McKinsey के लिए अप्लाई करना चाह रही थी. Now two different things. She came up to me. She's like, how do I draft for HR? How do I draft for marketing, etc. So, we sat through the night because next day उसको भेजना था resume. So what we did was that जो McKinsey के लिए हमने resume बनाया वो बहुत professional resume बनाया on the basis of proper keywords. We kept it very apt. एक page से ज़्यादा हमने extend उसको नहीं किया, and we kept it really short. बड़े decent fonts use किए, no tabular formats, and very humble to go with because HR है. Then for marketing, what we did was हमने उसका जो रेज्यूमे बनाया वो प्रॉपर ब्लैक बैकग्राउंड पे बनाया, बिकॉज नेटफ्लिक्स अगर आप देखो तो नेटफ्लिक्स का जो लोगो एंड द पिक्चराइजेशन इज डार्क, और हमने जो एक्सप्लेनेशंस दी या जो बुलेट पॉइंट्स दिए वो नेटफ्लिक्स के आइकॉन की तरह लिस्ट किए.
हमने जो हेडलाइन दी वो नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज हैं उस तरह से हमने उसकी हेडलाइंस दी, और हमने स्टोरी लाइन जो बनाई कि इसका ये इंटर्नशिप है, ऐसा ऐसा है, तो हमने उस बेसिस के ऊपर उसका रेज्यूमे बनाया. Fortunately, she got shortlisted for both, right? And um, she got selected in both the organization, and eventually she joined Netflix. Correct? So her resume was absolutely outstanding. It's not that I did it for her. मैंने बस उसको आइडिया दिया, इम्प्रोवाइज उसने किया. उसी तरह से एआई का, इसका एटीएस का जो फ्यूचर है, कंप्लीटली डिपेंड्स कि हमारी फॉर्मेटिंग किस तरह से चेंज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. द इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनल डेटा. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनल डेटा, व्हाट आई मीन इज कि पहले लिंक्डइन नहीं होता था, तो हम लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं लिखते थे रेज्यूमे में. 2010-11 में जब मैंने रेज्यूमे बनाया, हम लोग नहीं लिखते थे, हमें पता ही नहीं था लिंक्डइन है कि नहीं है. राइट? फेसबुक हम लिख नहीं सकते बिकॉज दैट्स अ सोशल मीडिया थिंग. तो लिंक्डइन है. उस टाइम पे पोर्टफोलियोज नहीं थे. उस टाइम पे गिटहब प्रोफाइल्स या आपकी किसी और तरह की जो बियांस हो गया, या आपकी और किसी टाइप की प्रोफाइल्स हैं, उस तरह की जो प्रोफाइल्स थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी. तो ये क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हमने अडेप्ट किया, इंटीग्रेट किया अपने एटीएस में. Correct? So integration of personal data so that we could create more personalized resume, which highlights the relevant skills, experience, etc., etc. So कुछ टाइम के बाद मे भी हो सकता है दैट हम लोग एडवांस्ड कीवर्ड एक्सट्रैक्शन पे चले जाएं, वेर इन वी आर आइडेंटिफाइंग सम न्यूआंस्ड कीवर्ड्स या फ्रेजेस विद द रेज्यूमेस, या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है. राइट? आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल व्हिच टॉक्ड अबाउट रेज्यूमे सम टाइम बैक कि अभी तो हम लोग ये सब कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद हम लोग लाइव रियल टाइम रेज्यूमेस क्रिएट करना शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम इंफॉर्मेशन डालेंगे एंड रिक्रूटर्स को वो रियल टाइम पे चेंज होती दिख जाएगी स्किल्स के साथ. अगर मैंने 2 इंटर्नशिप्स कर ली हैं कंटेंट राइटिंग में, तो कंटेंट राइटिंग का स्किल का जो रेट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. सो यू डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, right? With dynamic formatting, some transferable skills, simplicity, etc., etc. So yeah, I think when you seek the future, that's how it's going to be. And that's good to know that, to actually get into a job or internship, we need to customize our resume. Likewise, you said that you and that students of yours made the resume of Netflix, right? So, what do you suggest? Does everyone should customize their resume based on the, company's logo or in a different style? Or shall we follow a normal resume method only? I think it depends from requirement to requirement, wherein someone who is looking at a more professional dynamics in the resume, right? जैसे एचआर की प्रोफाइल्स है, उसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, या जहां मार्केटिंग में आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं एक फाइनेंशियल इंसान को हायर कर रही हूँ, आई एम हायरिंग अ फाइनेंशियल पर्सन, so there I would expect more theory. I would expect more skill set. I wouldn't want too much of creativity there. But yes, if I'm hiring someone, let's say into videographing or a photographer, or I'm hiring someone with these specific you know skills which जो formal नहीं है, correct, then Got it. it is okay. But it is always suggested that you create a very professional attire of a resume like you have for yourself. So it is always better that we create and customize the resume according to what the company expects, according to what the job description is. Yes, you need to change your resume every time your job description changes. अगर मैं 10 ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ दिन में, तो मेरे को 10 बार करना पड़ेगा, वो एफर्ट मुझे डालना पड़ेगा. Right? So yeah, that's how it is. And Ishika, just there is one. Okay, someone I thought has written. You can all post your questions in the chat box, and we can quickly pick it up one by one once we can finish. Right. So my request to all the audience members is that whatever questions you have, start writing in the chat box. As soon as we see your questions, we'll start answering those questions. Yes, Ishika. Exactly. And Kudrat, you were talking about transferable skills. So we would really love to know what are those transferable skills and how will it help us in our future and careers.
Okay. Okay. Now, before we talk about transferable skills, let me just talk about the skill set that we focus on the resume, right? Yes. Now, एक होता है हार्ड स्किल्स आप लिखते हैं. व्हेन आई से हार्ड स्किल्स, आपके हार्ड स्किल्स हो गए आपके टेक्निकल स्किल्स, करेक्ट? आपके टेक्निकल स्किल्स विद रिगार्ड्स टू लेट्स से डेटा साइंस में आपने पाइथन सीखा है, एक्सेल सीखा है, कोई भी एसक्यूएल सीखा है, मशीन लर्निंग सीखा है, टैब्ल्यू सीखा है. ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके स्किल सेट होंगे. लेट्स से आपने रिक्रूटमेंट या सैलरी स्ट्रक्चर पे कोई प्रोजेक्ट किया है तो आप वो मेंशन करेंगे, या फिर आपने जॉब एनालिसिस के ऊपर कोई प्रोजेक्ट किया है तो आप वो मेंशन करेंगे. आपने जॉब रोटेशन के ऊपर कोई प्रोजेक्ट मेंशन किया है तो आप वो मेंशन करेंगे. हार्ड स्किल्स आपके वो चीजें हो गई जो आपके टेक्निकल एबिलिटी को यू नो काइंड ऑफ फोकस करती हैं. ठीक है. देन वी टॉक अबाउट योर सॉफ्ट स्किल्स. सॉफ्ट स्किल्स हो गए आपके कम्युनिकेशन हो गया, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स हो गए, आपके anything which is to do with the professionalism of a candidate, correct? आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, आपके स्किल्स लाइक ऑफ कोर्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो गई. ये सारी चीजें जो हैं आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं, और ये मेंशन करना बहुत जरूरी होता है बिकॉज जॉब डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें आप देखते हैं, करेक्ट? Now, talking about transferable skills. Transferable skills is nothing but your ability that you can apply in different situations. These are skills that will help you think through certain situations in the organization. जैसे अगर आप एक गुड कम्युनिकेटर हैं, ठीक है, तो आप एक गुड निगोशिएटर भी हो सकते हैं. दैट्स अ ट्रांसफरेबल स्किल, करेक्ट? नाउ लेट्स से आप में टाइम मैनेजमेंट का स्किल है तो आप डिसीजन मेकिंग क्विकली कर सकते हैं, right? So it is not that something that you have to mention on the resume, correct? But these are skills that shows कि आपकी versatility क्या है, आपकी ability to adapt and evolve with the ecosystem of the business, वो क्या है. ठीक है. आप ये जो skills हैं, you can develop these transferable skills in your job also, in your hobbies also, घर पे volunteer work से. Communication skill is a transferable job, सॉरी इज अ ट्रांसफरेबल स्किल. क्यों? क्योंकि ये आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. कोई भी स्किल जो आपका एग्जिस्टिंग है वो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट इज समथिंग नोन एज ट्रांसफरेबल स्किल. इवन इफ यू आर एन एंट्री लेवल कैंडिडेट, चांसेस आर कि आपके पास ये स्किल्स ऑलरेडी हों, और अगर नहीं है, so these are skills that you can transfer to the organization, groom them and become better at it. So I think we all should work on transferable skills. This is a plus point that we should know. So now, Kudat, we have a question over the chat box. Nikhil is asking, for engineering background students, do we have to elaborate experience in detailed manner for resume preparation? I think he's asking for that reverse chronological order. All right, all right. So, okay, one of the most important things in the resume, and thank you, Nikhil, for bringing this question, is कि जब भी आप resume बना रहे हैं, अभी मैं आपको resume के format की headlines बताऊंगी आगे, session में, आगे इस continuity में. बट जब भी आप अपने resume में कोई भी चीज mention कर रहे हैं, whether it is your work experience, internship, educational, it has to be in a proper chronological manner. When I say chronology, starting from the latest. जैसे अगर मेरे पास 12-13 साल का एक्सपीरियंस है तो जो मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस है मैं उसको सबसे पहले मेंशन करूंगी, फॉलोड बाय द अदर्स. सो दैट इज वन पार्ट. दिस वील कवर, इशिका, आई थिंक इन द नेक्स्ट सेगमेंट वी शुड टॉक अबाउट द headlines in the ATS friendly resume. So I think your question, Nikhil, is what I understand is that what your experience is. When I say elaborate, you need to elaborate in a way which is short and crisp. आपने 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो कुछ तो सीखा होगा. तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आप मुझे उसकी कहानी बताओ. मैं उसकी आउटलाइनिंग आपसे जानना चाह रही हूँ in form of bullet points. Right? Like my role and responsibility at my current organization is that I lead a team of these many members for preparing students. I take up sessions on these many topics. I strategize so many things for this. I have I collaborate with colleges. I do this. So this is like pointers so that
I did not give away too much information, neither I withheld too much information. Because if I give away too much, then the HR will lose interest कि यार इसने तो सब कुछ बता दिया है, maybe let's meet the other candidate. तो जितना short and crisp आप रखोगे, they would want to meet you because they would want to know more about what you have done. So you don't have to elaborate too much in details. एक work experience के 4 से 5 bullet points is more than sufficient. Ensure it is in bullet points. Never write a paragraph because ATS will never pick a paragraph. This is my advice to all of you here. Never mention anything in a paragraph. There is only one section in your resume, which is the career objective section, which should be in a paragraph form. All right. So I Good. think we are So getting this, questions, Ishika. yeah, Kudrat, we have another question by two students. So there's a student named as Katrina Caff, and she's asking us, ma'am, tell us that I am completely fresher, I have no work experience, then what should I mention in my first resume for shortlisting? It's a pleasure to talk to Katrina Kaif. I don't know whether I would be doing that in my lifetime, but it's a privilege Same here. anyway. So, when we talk about resumes for complete freshers, there's always a dilemma as to what should we write and what should we not write. ठीक है, तो we always try to keep it elaborate in a way कि हम लोग career objective इतना अच्छा लिखेंगे that what am I aspiring to do, understand कि career objective as a heading का मतलब क्या है, right? उसका मतलब ये है कि आपका objective क्या है career का, correct? So this is what I'm wanting to do. Let's say I'm an aspiring HR candidate who is wanting to explore a lot of opportunities in this segment. Okay, then the second you can showcase is your educational qualification. Like आपने अगर MBA किया है, BBA किया है, तो आप clearly mention करें कि आपने MBA BBA किस फील्ड में किया है, क्या आपकी परसेंटेज थी. ठीक है, उसके बाद अगर आपकी कोई इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट है तो आप उसके बारे में elaborate करें. आपने कोई सर्टिफिकेशन की है, आप उस चीज के बारे में लिखें. अगर आपने कोई कॉलेज में प्रोजेक्ट किया है, उसके बारे में लिखो. अगर ये कुछ नहीं किया है, ठीक है, if you haven't done anything, then the best way to showcase is the extracurricular activities that you have done. There are only two ways जिससे आपका resume shortlist होगा: career objective, extracurricular activities, right? आपके skills की वजह से, इन 3-4 चीजों की वजह से आपका resume shortlist होगा. Another most important point here is a properly optimized LinkedIn profile. आप लोगों ने LinkedIn profile बनाई है, नहीं बनाई है, I have no idea, right? बट आप अगर LinkedIn प्रोफाइल अपनी मेंशन कर रहे हैं रेज्यूमे में, तो इट शुड बी प्रॉपरली मेड. व्हेन आई से प्रॉपरली मेड, पिक्चर सही होनी चाहिए, हेडलाइन सही होनी चाहिए, समरी सही से लिखें कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, आप क्या कर चुके हैं. कंप्लीट करिए सारे सेक्शंस और अच्छे चीजों को प्रमोट कीजिए, रीपोस्ट कीजिए, या फिर शेयर गुड इनसाइट्स. Seek endorsements and recommendations from your faculty members. You can talk to your friends to endorse certain skills. So a fully apt LinkedIn profile also tells a lot about you. I hope I've answered that question, Ishita. Yes, Kudrat. Likewise, you mentioned that previously LinkedIn was not important because LinkedIn was not in the picture, but now Hmm. it is mandatory, a part of resume. So Kudrat, Katrina is saying that actually my name is Weber. Good to know Oh, that. what a And there's heartbreak. one more question by Abhishek that he's asking that how to showcase internships and lots of online certification on resume if someone is pivoting from engineering to finance. How to how such experienced candidates should make resume if it is new to finance. I think it's career switching question. Correct. Correct. See, when you are changing your career from engineering to finance, it's absolutely fine. There would be certain roles, uh, you know, that would only fit very niche roles. Like, for example, some roles like investment banking, you cannot go for that type of a role, right? So, certain administrative heads, or certain roles like more into fintech sort of a caliber, you can fit there. Now, having said that, your engineering background will always remain with you.
It's not going to go away just because you made a career switch. And it is okay to make a career switch from engineering to, finance, or from tech to non-tech, whatever, because there is a lot happening in terms of technology in the finance domain as well. Like I mentioned, fintech, right? So whatever experience that you have in your engineering, you should mention that. There is no denying the fact that, और आप उसको इस तरह से भी नहीं शो कर सकते कि वो फाइनेंस का लगे. दैट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल. वो तो होगा ही नहीं. करेक्ट. आपको उसको इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड रखना पड़ेगा. जो आपकी सर्टिफिकेशंस हैं वो आपने अलग से की हैं, वो आपको अलग से मेंशन करनी पड़ेंगी. लेकिन अगर आप फाइनेंस में कोई डिग्री ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, तो प्लीज इंश्योर करें कि आप उस डिग्री में इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट जरूर करो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू. करेक्ट. एंड online, I can read the question: how much experience does a candidate should make if he is new to finance? देखो, experience तो आपका वही count होगा जो आपका है. तभी कह रही हूँ कि अगर फाइनेंस में आप अभी कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं या कोई डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू काइंड ऑफ डू अ सर्टन प्रोजेक्ट और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. बिकॉज finance is a very broad field with different types of role. ठीक है. different roles with different skill set, different aptitude. करेक्ट. तो आपको थोड़ा सा उस हिसाब से अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, जैसे एमएस इन फाइनेंस भी होता है, बाद में आप कर सकते हैं. दैट इज बेसिकली दैट यू टेक एक्स्ट्रा कोर्सेज इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस टू अंडरस्टैंड कि क्या है. बेसिक फाइनेंस की जॉब्स आपको मिलेंगी भी नहीं. आपको जो मिलेंगी वो टेक रिलेटेड फाइनेंस जॉब्स मिलेंगी. जैसे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं कुछ फाइनेंस में, उसमें आप क्या हेल्प कर सकते हैं एज अ कंसल्टेंट, एज एन एडवाइजर. करेक्ट. सो these are all types of roles that you can get, so you can design your resume according to that. Got it. Kudrat, Vaibhav is asking a similar question, that what if I have all the skills required for the JD, but I don't have degree they are asking, then what to do? ओके. कई बार कंपनी की एक पॉलिसी होती है कि मुझे चाहिए एक स्टूडेंट जिसने एमबीए किया है इन मार्केटिंग, लेकिन आपने एमबीए मार्केटिंग नहीं किया है, लेकिन आपने कुछ एक इंटर्नशिप्स की हैं जो मार्केटिंग से रिलेटेड हैं. इन योर प्रीवियस बीबीए किया है आपने फॉर एग्जांपल. तो अगर कंपनी ने मेंशन किया है कि मुझे एमबीए ही चाहिए, देन यू कांट डू इट. देन दैट्स द कंपनी पॉलिसी दैट दे आर हायरिंग ओनली एमबीए कैंडिडेट्स. लेकिन अगर वहां पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, नॉर्मल लिखा है बैचलर्स डिग्री और मार्केटिंग का है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. सिर्फ अपना बैकग्राउंड जो है वो उस तरीके से शो करें कि आप उनको जवाब दे पाए, आप जस्टिफाई कर पाए दैट दिस इज व्हाई यू हैव अप्लाइड, right? If they are looking for a degree and a diploma, then they will not hire you. I mean, I don't know how many of you have watched Suits or not, but उसकी starting में जब वो hire करता है उसको, I'm forgetting the names, उसके पास डिग्री नहीं होती है, वो उसको वैसे ही हायर कर लेता है कि इसने लॉ किया है, हार्वर्ड से किया है, ऑक्सफोर्ड से किया है, फेक डॉक्यूमेंट्स बना के, एंड देन ही स्टार्ट्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. But in real life, it does not happen. So you should have what the company requires. डिग्री मांगेंगे तो आपको शोकेस करनी पड़ेगी, नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज वो कंपनी की पॉलिसी है. I think it was a perfect example of fake Right, profile Ross. resume. Yeah, absolutely. So, okay. So, Kudrat, I would like to pick up a few more questions. So, Sure. I can see that, okay, now there are no more questions. So, we would rather continue with our discussion. And in case, if you have any question, you please write it over the chat box. We'll pick up those and then we Yeah, can. I see one question from similar Abhishek. I have done a project showcasing my valuation skills and investment thesis, but how can I show this on my resume? How to highlight web portfolio? Will this help? I mean, however, I understood the question. See, there is no way of showcasing any skill on the resume. जो आपने किया है आपको वही बताना पड़ेगा. आपने थीसिस लिखी है, रिसर्च पेपर लिखा है या कुछ लिखा है, तो उसका एक सेपरेट सेक्शन होता है रेज्यूमे में. अगर आपने
प्रोजेक्ट्स किए हैं, रिसर्च किया है, तो वो आप वहां पे शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोई पोर्टफोलियो अगर है, ठीक है, फाइनेंस का कौन सा कोई भी पोर्टफोलियो आप मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसका लिंक दे सकते हैं सो दैट दे नो कि आपका ये वाला है। जैसे आई थिंक ग्रो करके एक आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्रो, और आई थिंक इन्वेस्टोपीडिया करके एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो आता है जिसमें आप अपना लिस्ट कर सकते हैं, जो कुछ एक HR typically check करते हैं before they hire. So I think that is how you can showcase your skills. See, there is no fixed rule to showcasing your skills. जो आपने किया है आपको वही showcase करना है। ठीक है, चाहे आपने थीसिस किया है तो आप रिसर्च में डाल सकते हो उसको, रिसर्च एंड थीसिस का एक सेपरेट सेक्शन आप बना सकते हैं रेज्यूमे में टू शोकेस व्हाट यू डिड, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यस इशिका, वी कैन कंटिन्यू। So I think that answers Abhishek's question. Kudrat, to continue with the question, I would like to ask that how does action verbs, contribute to an ATS-friendly resume? Wonderful. So a lot of people here would not resonate with action verbs. So action verbs are words which showcase, जैसे हम लोग ये लिखना चाहते हैं that I was doing analysis of this report in this job, right? एक simple language है, लेकिन उसको आप शोकेस कर रहे हैं एनालाइज स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट इन द रोल। लाइक मेरे को लिखना है आई वॉज इन टू स्ट्रेटेजाइजिंग एंड एनालाइजिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस फॉर एग्जाम्पल। So I would directly start my bullet point in my work experience section is strategized and analyzed client management services, etc. For example, right? So these are words which you should use to begin your bullet points with. Strategized ho gaya, analyzed ho gaya, recording ho gaya, maintaining ho gaya. Then, couple of other words which is not coming to my mind at the moment, right? Showcased ho gaya, achieved ho gaya. So all these are words which are there in the job description also, and आप अपना sentence ही उसी से शुरू कर रहे हो, so makes all the more sense that you put these words into your job description. Got it, Kudrat. So you were mentioning that we would, you would discuss about what are the sections of a ATS-friendly resume. Yeah. I think Yeah. right now we should discuss all the sections. All right. I think, yeah, before we exhaust the time limit, that's very important. And then I would come to, the questions. I see some questions in the chat box. All right. So when we talk about application tracking systems headlines, ki resume kaisa hona chahiye? It begins with your name, Kudrat Sharma, my professional email ID, which is kudrat.sharma@whatever. ठीक है, निर्वाणा पंक और जेम्स बॉन्ड 007 टाइप ईमेल आईडी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर शुड ऑलवेज बिगिन विद योर कंट्री कोड +911234 whatever the number is. One thing which I forgot, below the name आपका एड्रेस। एड्रेस का मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग नंबर 1 हाउस नंबर 2, इतना नहीं देना है, गुड़गांव कॉमा हरियाणा, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल का शॉर्टन्ड यूआरएल लिंक। अगर आप लिंक्डइन खोलेंगे तो अब आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टू shorten your URL link and mention it on the resume. So that is one section. Second section is career objective. Career objective is the only section in the resume which is in a paragraph form. Anything on the resume will never start with I did this, I am aspiring to work on this. No, because resume है, आपका नाम है, but obvious है कि आप ही के बारे में बता रहे हैं, तो I नहीं लिखना। बहुत लोग ये गलती करते हैं, इट्स अ रियली टेक्निकल थिंग। बहुत हाई लोग सोचते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट इज ऑलवेज गुड दैट द पर्सन रीडिंग इज डोंट रीड इट एज आई एम एस्पायरिंग, ही ऑलवेज रीड्स इट एज as an aspiring data science candidate, I'm looking forward for opportunities, or whatever you want to write in career objective. Career objective basically 3 to 4 lines से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें हम clearly mention करते हैं what are we wanting to do.
ठीक है, हम अपने स्किल्स को ग्रूम करना चाह रहे हैं, हमारे पास ये स्किल है, हम इसको यहाँ से यहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं, या हम ये चीज सीख कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 5 years. So this is my goal for the next 5 years, and this is what I'm seeking, right? After your career objective comes the most important thing for experienced candidates, which is your work experience. जिनका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है वो चाहे तो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, अगर है। अगर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके बाद इमीडिएटली आप अपना सर्टिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं। फॉर पीपल हु आर राइटिंग योर वर्क एक्सपीरियंस एंड इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, आप पहले एक ब्रॉड हेडलाइन देंगे, वर्क एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, नीचे लिखेंगे लेट्स से आई एम गोइंग टू राइट एज बिजनेस एनालिस्ट at Internshala, January 2020 to present. That is my current experience. 4 to 5 bullet points of that explanation मैंने क्या किया, उसके बाद मेरा change हुआ, तो then I'm going to write as business analyst intern at Internshala from 2018 to January 2020, and these were my roles and responsibilities. Correct? ये हो गया वर्क एक्सपीरियंस। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी आप इसी पैटर्न में लिखेंगे। प्रोजेक्ट है, अब वो चाहे यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट है, चाहे कॉलेज प्रोजेक्ट है, चाहे कहीं आपने बाहर किया है, तो आप वो मेंशन करेंगे कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है और उसके नीचे बुलेट पॉइंट्स की आपकी लर्निंग क्या है। कई बार हम एक कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप अपने स्कूल कॉलेज वाले फ्रेंड्स के साथ इकट्ठे करते हैं। तो एक इंसान ने रेज्यूमे बना दिया, हम उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इशिका और मेरी इंटर्नशिप में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने इशिका से वर्ड बाय वर्ड कॉपी किया है, राइट? तो फिर मेरा अपना कुछ नहीं है। सो ऑलवेज इंश्योर दैट वट एवर यू राइट इन ऑल दीज थिंग्स शुड बी रिटन बाय यू। चाहे आप चैट जीपीटी से कॉपी करके उसको बना के लिखें, चाहे आप उसको जैसे भी, बट इट शुड बी योर वर्जन। Then once you are through with these three, you write your certifications अगर आपने की हैं। Certification, let's say you have done data science in certification from Internshala. This is your duration, ठीक है? उसमें आपने टॉपिक्स क्या क्या सीखे हैं तो आप लिख सकते हैं, टॉपिक्स कवर्ड या टॉपिक्स लर्नड। ऑल द मोर इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि अगर इंटर्नशाला से सर्टिफिकेशन करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें प्रोजेक्ट्स होंगे, बट अगर कहीं और से कर रहे हैं हो सकता है उसमें प्रोजेक्ट्स ना हो, तो आप स्किल्स मेंशन कर सकते हैं जो आपने सीखे। फिर आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपका क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में होगा, जिसमें जैसे मैंने एमबीए किया है तो मैं पहले ऑन माइंडेड, एमबीए नहीं लिखना है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है, एमबीए इन मार्केटिंग इन एचआर, राइट? देन माय परसेंटेज जो भी थी, ठीक है? उसके बाद बीबीए, फिर 12th, फिर 10th। इंश्योर कि अगर आप परसेंटेज मेंशन कर रहे हैं तो आपकी हर एक एजुकेशनल में परसेंटेज हो, एक यूनिफॉर्मिटी हो। अगर सीजीपीए मेंशन कर रहे हैं तो सीजीपीए हो। ऑल्सो कई बार हम लोग 60% से ऊपर नहीं आ पाते कुछ लोगों के, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। ट्राई नॉट मेंशनिंग इट इन द रेज्यूमे कि अगर आपके 60% से बिलो है। देन उसके बाद आपका सेक्शन आता है स्किल्स का, जिसमें अगर आप 8 स्किल्स मेंशन कर रहे हैं, इफ यू राइटिंग 8 स्किल्स, 4 शुड बी टेक्निकल, 4 शुड बी सॉफ्ट स्किल्स, करेक्ट? Then after that, for people who are freshers, you can write your extracurricular activities, what you have volunteered for, you were part of some organization, committee or anything. Don't write head boy, head girl. If you have done something inter school, interstate, national level pe, write those, correct? And that's it. That's where your resume ends. No declaration, nothing doing. This is where your resume ends as an ATS resume. Now, there would be a question कि मैंने 2018 में अपनी MBA कंप्लीट की, उसके बाद मैंने 2 साल जॉब की, अब मेरे पास जॉब नहीं है तो मेरा करियर गैप है, मैं उसको कैसे मेंशन करूं रेज्यूमे में? मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आप जो ड्यूरेशन लिख रहे हैं रेज्यूमे में, राइट, उससे एक एचआर को पता चल जाएगा कि आपके करियर में गैप है। फिर मेरा क्वेश्चन होगा आपसे, why is there a gap in your resume? Not in your resume, but in your career. Why did you take a career break, medical reason, anything? Never lie.
आपने गैप जिस भी वजह से लिया है, इट्स ऑलवेज गुड टू बी वोकल अबाउट इट, इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक अबाउट इट, दैट दिस इज व्हाई यू टुक अ गैप. क्योंकि किसी का क्वेश्चन था, द स्टूडेंट्स हु हैव करियर गैप, कुछ नहीं कर सकते, गैप है तो है, शोकेस नहीं कर सकते ओपनली बट इनडायरेक्टली, क्योंकि आप ड्यूरेशंस मेंशन कर रहे हैं. एमबीए 2018 में की, 18 से लेके 20 साल तक यहाँ जॉब की, उसके बाद मुझे लगेगा कि अच्छा 20 से 24 तक कुछ नहीं है, सो देन आई नो राइट कि आपका 4 साल का जो गैप है, तो मैं आपसे सवाल पूछ लूंगी कि 4 साल का गैप क्यों है, राइट? तो आप मुझे उस चीज का जवाब दे दीजिए. दैट्स गोना बी एब्सोल्युटली फाइन. So this is what a standard ATS resume looks like. It should not exceed more than 1 page वैसे तो, ठीक है. 2 is acceptable. इससे ज्यादा आपके पेजेस एक्सीड नहीं करने चाहिए. टैबुलर फॉर्मेट्स नहीं होने चाहिए, लाइंस नहीं होनी चाहिए, क्लटर्ड नहीं होना चाहिए रेज्यूमे आपका बिल्कुल भी, ठीक है. फॉन्ट्स जो आप यूज कर रहे हैं, डोंट मेक इट कलरफुल कि आपने हेडिंग्स रेड करी हैं, बाकी सारी चीजें ब्लू हैं, नथिंग लाइक दैट. Okay, keep it very precise. All right. Thank you, Kudrat. I think, this was a entire agenda of how to make a resume. But I actually want to know how to check whether our resume is ATS friendly or not before actually selecting it. I mean, submitting it. Is So there any ATS, tools? yes, there are tools for ATS scanning. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक ATS फ्रेंडली रेज्यूमे चेकर की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं. माई आउटस्पार्क है, जेटी है, एनहांस सीवी है, माई परफेक्ट रेज्यूमे है, जॉब स्कैन है. इन सब में आप अपना रेज्यूमे अपलोड करके चेक कर सकते हैं कि वो ATS फ्रेंडली कितना है, व्हाट इज द परसेंटेज. ठीक है. अगर आप इसको 2-3 बार करेंगे तो वो आपको चार्ज नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तो वो आपसे थोड़ा सा मिनिमल अमाउंट लेता है टू verify that resume, and it's all about all the websites. One which does absolutely free of cost is I think Enhance CV. तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं अपना रेज्यूमे कि ATS फ्रेंडली है कि नहीं. All right. And what is a good ATS score? See, anything which is below 75% is not good. Right? Okay. So anything that you are achieving which is below 75, that's not highly recommended. However, कई बार ATS में स्कोर इसलिए भी नहीं आता है क्योंकि आप जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं डालते हैं साथ में, बिकॉज ATS को ये नहीं पता ना कि वो कीवर्ड्स के हिसाब से है कि नहीं, राइट? तो Yes. अगर आप किसी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बना रहे हैं तो आई एम यू कैन ऑल अपलोड द जॉब डिस्क्रिप्शन, यू कैन ऑल अपलोड योर रेज्यूमे, एंड उसके हिसाब से वो आपको करके दे देगा. All right. Good to know. So we should always target to keep it above 75%. Absolutely. That should be an ideal score. All right. So with that, I have one more question with a student who is there in the class. Abhishek is asking that if I am pursuing any degree, shall I mention it? Hope it won't attract negative attention from the recruiter. No, it wouldn't. अगर मैं कुछ परस्यू कर रही हूँ वो तो मेरे बेनिफिट के लिए है ना, और हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए भी हो. तो आप अगर कुछ परस्यू कर रहे हैं, लेकिन मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2020 एंड परसुइंग, जो भी है, मतलब 24 एंड परसुइंग, राइट, हाइफन करके आप उसको परसुइंग कर सकते हैं. तो आपको इससे रिफ्रेन करने की जरूरत नहीं है. इट्स फाइन, रादर इट इज बेटर दैट आई वुड नो कि आप परस्यू कर रहे हैं, उसमें नेगेटिविटी का कोई बात ही नहीं है. All right. All right. And one more thing, Kudrat, likewise you discussed that गैप ईयर को आपको मेंशन करने का जरूरत नहीं है रिज्यूमे में, बिकॉज अगर ईयर लिखा है तो रिक्रूटर विल नो दैट देयर वाज अ गैप ईयर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट करियर स्विच, like how to address if a person is changing from, for example, engineering field to finance or from HR to sales domain? How to address, like So we will yeah, be a see, fresher in a different industry. correct. So see, there is no way of putting it on the resume because, as I said earlier, ना आप उसको छुपा सकते हैं और ना ही वो irrelevant है. लेकिन आप उसको किस तरह से रिलेट करते हैं जिस रोल पे आप अभी अप्लाई कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल है सेल्स में, आपका जो जॉब होती है सेल्स में, आपकी जॉब इज मोर ऑफ selling a product, right? You have to interact. अगर आप niche देखें उसका तो you have to interact with a lot of customers, you have to get them onboarded for a product,
आपको बेसिकली बेचना है, ठीक है। और एचआर में आपको क्या करना है, इंटरैक्शन आपको भी करनी है, आपको बात करनी है, आपको इंटरव्यूज लेने हैं। तो वो आपको एक सामने वाले इंसान का ऑब्जर्वेशन बता देता है, आपको इंटरपर्सनल स्किल्स बता देता है दैट वेदर द पर्सन इज एप्ट फॉर द रोल और नॉट। तो आप अगर इसको उस हिसाब से रिलेट करके स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं कि ठीक है, व्हाट इफ सो व्हाट आई हैव अ सेल्स एक्सपीरियंस एंड नाउ आई एम वांटिंग टू परस्यू माय करियर इन एचआर, इज व्हाई बिकॉज एक लोगों का स्टैंडर्ड आंसर होता है दैट आई लव इंटरैक्टिंग विद पीपल। तो जो सबसे पहले ये चीज बोल देता है ना, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि इसको नहीं पता ये क्यों स्विच कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऑनेस्टली बता रहा है कि मेरे से सेल्स में लेट्स से फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा टारगेट्स थे, या मुझसे प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा था, बट मैं लोगों से इंक्वायरी बहुत अच्छे से कर लेता था, मैं उनका प्रोफाइल अच्छे से डाउनलोड कर लेता था, तो वो चीज जब मैं एचआर के लिए अप्लाई करूंगा तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगी, बिकॉज यहाँ पे मुझे सेल करनी है, यहाँ पे मेरे को उनका इंटरव्यू लेना है, सो आई एम ऑन द अदर साइड। ऑल्दो एचआर इज ऑल्सो टारगेट ओरिएंटेड जॉब, राइट, बट ऑफ कोर्स सेल्स जितना टारगेट नहीं होता है, ठीक है। तो आप यू हैव टू बी ऑनेस्ट एज टू व्हाई यू आर स्विचिंग। ये नहीं ना कि चाचा के लड़के ने या किसी ने बोल दिया कि तू एचआर में शिफ्ट कर ले तो मैंने कर लिया, पता है नहीं कि मैं एचआर में करूंगा क्या। और एचआर सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं है, उसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे मार्केटिंग में बहुत सारी फील्ड्स हैं, फाइनेंस में आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज, यू हैव टू टेल योर स्टोरी इन अ वे कि अब इंजीनियरिंग से फाइनेंस में आ रहे हैं, ठीक है। देखा जाए तो बहुत निश फील्ड है, इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है नहीं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स हैं आर ऑल वर्दी, ठीक है। यू कुड गो इनटू फाइनेंशियल एनालिसिस, यू कुड गो इनटू मे बी नॉट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एज सच, लेकिन इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कोई थीसिस करी है, सो ऑफ कोर्स थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है। बट आप फिनटेक सेक्टर में जहाँ पे फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है या फाइनेंशियल वैल्यूएशन होती है, वहां पे आप जा सकते हैं। So, it's a niche field, but then why did you choose it? Because, you were good in engineering, you were good with numbers. You wanted to explore all such things. Like, I often say this to my students that किसी को भी टैक्सेस की नॉलेज नहीं है। हम टैक्स कैसे भरते हैं, टैक्स क्यों कटता है, कितना कटता है, वैट अलग से क्यों कटता है, या हम जीएसटी देते हैं तो क्यों देते हैं, या हमारी सैलरी में से टैक्स इतना कैसे कटेगा, मतलब हमें सैलरी स्ट्रक्चर्स के बारे में सॉरी टैक्स स्ट्रक्चर्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि हमें कल को अगर फाइल करना है अपना टैक्स का, तो इट टुक मी टाइम टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ से पैसे बचाऊं या क्या करूं फॉर दैट मैटर, राइट। तो इसमें इस स्पेस में ग्रोथ बहुत ज्यादा है, सो फॉर द पर्सन हु इज परस्यूइंग इंजीनियरिंग एंड फाइनेंस कुड come up with some solution like that. Exactly, Kudrat. So, there's one comment over the chat box that there are a lot of questions in the discussion section of Internshala Club. Please answer those also. Yes, we'll get back to the concerned person, and yes, we would like to answer all the questions. So, Kudrat, I cannot see any questions now over the chat box, and we shall wait for 1 or 2 minutes to see if there are any upcoming questions. Surely, surely we could do that. And in the meanwhile, just like an anecdote for the weekend for all of you, that don't push yourselves that you're the only ones looking for a job. Everybody here is looking for a job. So you don't have to lose hope. You don't have to think, ki, how am I better than the others? Am I better than the others or not? Because something that is destined for you will come to you at the right time. एफर्ट करना आपके ऊपर है, मैनिफेस्ट करना आपके ऊपर है, उसका आना कब है दैट डिपेंड्स, राइट। So don't lose hope, because every time I see a student, every time I interact, in fact today in the morning when I had one-on-one with one of my students, he was so conscious that I just received my offer letter from a company and I don't know मैं वहां जाके करूंगा क्या, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक्सेप्ट ही ना करूं। दैट्स स्कैरी टू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक एंड पे मैंने कहा आप जॉब ढूंढ रहे हो, दूसरे एंड पे आपको ज्वाइन करने की एंजाइटी हो रही है। सो आई थिंक you should just take that out of your mind and just go with full swing, because जब तक अपने आप को पानी में फेंकोगे नहीं तो स्विमिंग करना नहीं सीखोगे। थ्रो yourself in waters, test your waters. Yeah, that's really kind words. With this, Kudra, I would like to ask one question, and that's for all the students that
with what mindset students should get into a new organization? I might sound weird, and maybe people don't ban me for saying this, No, no, but it's completely fine. anything that you go ahead when you're joining a new organization, go with zero expectation. एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे वो कभी भी मीट नहीं होगी. ठीक है. हमेशा अपने आप को इतना प्रिपेयर करके यू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर ओपन टू क्रिटिकल फीडबैक एंड एक्सेप्ट इट दैट यू विल हैव 20% ऑफ नॉलेज. आपको 20% ही पता होगा किसी चीज के बारे में, क्योंकि वहां पे बहुत तीसमार खान बैठे हैं जिनको लगता है कि उनको सब कुछ पता है, लेकिन नहीं पता होता कई बार. ठीक है. तो आप जीरो एक्सपेक्टेशन लेके जाओ. ये मत जाओ कि हाँ मैं गूगल ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं इन्फोसिस ज्वाइन कर रहा हूँ, अब तो बस सेट है. नहीं है सेट. office work culture, office politics, and office, dynamics will take a toll one day, if not, or very soon, but at some point of time. और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं मीट होती. तो इसलिए एक ही चीज है, जीरो एक्सपेक्टेशन लेके जाइए. देन इट विल वर्क वंडर्स. देन यू विल ऑल्सो गिव योर 100% कि अच्छा ये तो मैंने सोचा नहीं था, मैं इसके ऊपर काम करूंगा. ठीक है. एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग. ठीक है. जरूरी नहीं है कि जाते ही आपको सब कुछ मिल जाएगा या जाते ही आप सबके कंफर्ट जोन में आ जाओगे. नहीं होगा. और अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत करो. ठीक है. टेक योर टाइम टू नो पीपल, टेक योर टाइम टू नो द वर्क. एवरीथिंग हैपेंस विद टाइम. लेट इट बी स्लो, बट लेट इट बी स्टडी. Slow and steady often wins the race. Yeah, that's what they Absolutely. say. So with this, we have one more question over the chat box, and that too by Abhishek is asking that how to manage politics for new people, and I think that he is talking about office politics, Kudrat. Yeah, like politicians do, diplomatics do, right? Bureaucrats करते हैं ना कि इसके साथ इसके जैसी, इसके साथ इसके जैसी. बट सी ऑफिस पॉलिटिक्स भी तब होगी जब उनको कुछ आपकी तरफ से मसाला मिलेगा पॉलिटिक्स करने के लिए. राइट. Exactly. या तो आप उसमें पढ़िए मत. अगर पढ़ गए हैं तो फिर आपको भी यूल हैव टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एज वेल. राइट. सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स नए लोगों के साथ इसलिए होती है क्योंकि वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. क्योंकि आप नई जगह जाते हो, आपको लगता है ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है. लेकिन आपका एक फर्म स्टैंड होना चाहिए. अगर आपको कोई चीज नहीं आती, एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो. अगर आपको कोई चीज आती है तो भी सुन लो. ज्यादा मत बनो, ओवर स्मार्ट मत बनो. ठीक है. पॉलिटिक्स भी वहीं से शुरू होती है. कोई एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स अगर होगी उसका पार्ट बन जाओगे इवेंचुअली. समझ भी नहीं आएगा कि मैं कैसे इसके पॉलिटिक्स का पार्ट बन गया. फिर उसको छोड़ना मुश्किल होता है. तो इसलिए अपना स्टैंड रखना हमेशा जरूरी है. लोग आपकी बातें तो वैसे भी करेंगे ना. तो इससे बेटर है कि आप अपने ट्रू सेल्फ को शोकेस करके अपना स्टैंड लेके बातें बनवा लो तो ठीक है. वही बोलते हैं ना कि शादी चाहे कितनी भी अच्छी कर लो, पनीर किसी के लिए हमेशा कच्चा ही रहता है. तो वो रहेगा. लोगों ने बातें बनानी है, वो बनाएंगे. 100 लोग आएंगे शादी में, 100 के 100 बातें बना के जाएंगे. कोई खुश होके नहीं जाता. और उसी तरह से हमारी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत जेन्युइनली कम लोग होते हैं जो हमारे लिए एक्चुअली हैप्पी होते हैं. तो यू शुड हैव दैट माइंडसेट. और वो आते आते टाइम लगता है. वो लेवल आने में थोड़ा टाइम लगता है. मेक मिस्टेक्स, यू लर्न फ्रॉम इट. Yeah, open suggestion. Kudrat is saying to make mistakes. That is a Absolutely do very that. good suggestion, Kudrat. So I don't see any question other than this over the chat box, Kudrat. So I think we should end the session over here. It's already 6 p.m. And Kudrat, I must say that it is always interactive and so much knowledgeable to have a conversation with you. And that too, students are saying over the chat box that thank you so much, ma'am, for answering the question, and you are too kind. So I'll say this on behalf of entire student. Thank you, Gudrat, for answering all the question, and it was so descriptive, and it was much needed session for each one of the students. Pleasure is all mine. Thank you so much. It's always, I'm happy to interact with Ishika and the others as well. Right. Thank you so much for being a wonderful host. I don't think that there could be a better host than you
for Thank the you so much. interactions that we My do. pleasure. Right? So I think someone is looking for templates. We can ask the team to post templates in the description after a couple of minutes. Right? Resume and Exactly. cover letter templates will be posted in the description. You can check. All right. So Exactly. thank you so much, everyone. It's always a pleasure. You wish to connect with us over LinkedIn, please do that, but with a proper optimized LinkedIn profile. This is a clear instruction for me, for my team, that we only accept LinkedIn requests which are fully optimized. You post about us on LinkedIn, we repost it from Internshala and Internshala trainings. And yeah, that's it. Thank you Yeah. so much. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Kudrat. And yes, have a great day. It's Friday also. Yeah, Have have a a great great, day. lovely weekend. All right. Thank Thank you. you. Thank you so much.